अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर। मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रही हूँ, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये देखें 2023 का ही है। इसमें 50% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, 35% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और 15% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 1 डेटाबेस। शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, what activities are involved in data processing, discuss in details, describe the file type from usage point of view and functional point of view, how do we organize the files on storage media, describe the different database models, write advantages and disadvantages of database DBMS. Long question है, in general what activities are to be performed on the database, discuss in detail, describe the file types from usage point of view and functional point of view. Chapter number 2 है basic concepts and terminology of database, define field, record and file, discuss the tables या relations are formed up in database DBMS, discuss the data manipulation in DBMS system, write down the properties of relations in detail, what is usage of indexes in FMS and DBMS, describe view, define key, describe types of key, define the data administrator, the database administrator. लॉन्ग क्वेश्चन में है, हाउ द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर नंबर 3 है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एनालिसिस stage while designing in database, explain the following with the help of figures, initiative या object attribute relationship, explain physical data model and conceptual data model, define explain the term data distribution strategy, file organization, define the term analysis, briefly discuss the following term, feasibility study, requirement analysis, data analysis, describe major object database design, explain data development process with diagram. लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ER diagram from the system of getting admission in your college. Chapter number 4 data integrity and normalization. Explain data integrity, what is relation in 3NF, explain normalization and normal form, explain second normal form 2NF, when is relation in first normal form, explain with example, define referential integrity, how can it be achieved, define functional dependency, what do we do to attain initiative integrity. Long question है, convert the ER diagram you have designed in the previous exercise for the admission systems of your college to relation database, also normalize the relations up to third normal form. चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब MS एक्सेस, डिस्क्राइब बेनिफिट्स ऑफ MS, डिस्क्राइब MS एक्सेस डेटाबेस कंपोनेंट्स, व्हाट इज मीन्ड बाय RDBMS, व्हाट इज IDE, define the use of toolbar in Microsoft Access, what are the advantages of using a Microsoft Access IDE, differentiate between form and report, describe the database window in Microsoft Access. लॉन्ग क्वेश्चन है, describe MS Access, describe benefits of MS, describe MS Access database components. चैप्टर नंबर 6 है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिलेशनशिप, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेशनशिप एंड जॉइन, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स कैलकुलेशन इन अ क्यूरी एंड आल्सो स्पेसिफिक द सम फंक्शंस,
What is query? Discuss its uses and advantages. Differentiate between sorting and filtering. Define the various types queries. Define basic term used in database. How can you create a query in design view? Create a query in design view. Create a query in design view and design view. Different type calculation in query and also specific the sum function. तो यहाँ पे हमारा हाँ आगे भी है, चैप्टर नंबर 7 भी है. चैप्टर नंबर 7 डिफाइन द डिफरेंट लेआउट्स ऑफ फॉर्म्स. डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स आर रिपोर्ट्स. व्हाट इज सब फॉर्म, व्हाट इज रिपोर्ट, what is a form created for a single table, how can you save and closed an auto report, how can report created for a single table, describe object linking in MS Access, explain the processor for editing data through form, how can you apply a search order to the report. चैप्टर नंबर 8 है डिफाइन अ बग. डिस्कस सम debugging of features of C++. Describe characteristic of high level programming language. Briefly describe the basic structure of computer program. Difference between linker and loader. Structured and unstructured program language. How would you create, edit, compile, link and execute a computer program? Describe briefly what necessary steps taken to prepare a computer program for execution. Explain with diagram. Long question है. Describe characteristic of high level language. What is meant by programming language? Discuss different types of program language. Explain computer program development process with diagram. चैप्टर नंबर 9 है डिस्क्राइब कीवर्ड्स. डिस्क्राइब वेरिएबल्स. हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन कंप्यूटर. डिफरेंशिएट बिटवीन declaring vs defining a variable in computer. Describe rules for naming variables in computer. Explain constant in computer language. Difference between constant and variable. Character constant and numeric constant. Write a note on the following arithmetic expression. Comments in C. Long question है what is variable. Discuss difference between declaring and defining a variable. Write down rules for naming variables in C. In computer, what is a data type? Discuss various computer data types of manipulate integers, floating point, numbers and character. How many types operators are variable in computer? Describe briefly. Also mention their procedure. चैप्टर नंबर 10 है what do we mean by standard input and output. Illustrate the use of point and function. Illustrate the difference between format specific and field width specific with example. Define the term is-cap sequence. List names and used of any 5 is-cap sequences. Explain standard library functions for character input. Write a program that converts a temperature in degree Fahrenheit to degree 1 Celsius for conversion used to formula Celsius is equal to 5/9 Fahrenheit 32. Write the general form of printf function. What is the use of catch function? Long question है. Write the program in example 5 using scan function. Write a program that takes a positive number with a fractional part and rounds it to decimal places. For example 25.4851 would round to 25.4 राउंड, मतलब इसको राउंड अबाउट करके लिख दिया है. और 62.4431 वुड राउंड टू, ये देखिए आगे 44 के आगे 3 था ना, अगर 5 या 5 से कम हो
तो आगे उस ऐड नहीं करते, यहाँ पे जिस तरह ऐड कर दिया है, ये 8 को 9 बना दिया है ना इस तरह। चैप्टर नंबर 11 है व्हाट इज अ control structure. Briefly describe the basic control structure for writing program. Describe the if statement. Explain test condition. Describe simple if statement. Explain it with diagram and an example. Describe if ELSE statement. Explain it with diagram and example. Describe nested if statement. Explain it with diagram and an example. Compare nested if and sequence of if and sequence of ifs or explain with example. Long question. Write a program in VB that input 3 numbers and display the maximum number by using nested in statement. Define if ELSE if statement. Explain its working with syntax, flow chart and example. चैप्टर नंबर 12 है डिफाइन अ लूप. हाउ मैनी लूप्स आर अवेलेबल इन कंप्यूटर. कंपेयर द फॉलोइंग लूप्स, वाइल लूप्स एंड डू वाइल लूप्स, वाइल लूप्स एंड फॉर लूप्स. ये 3 पार्ट बताए हुए हैं क्वेश्चन के. ये ए बी, हाँ 2 पार्ट हैं, ए और बी. डिस्क्राइब इटरेशन एंड लूप. Describe for statement its execution sequence while with flow chart and example. Describe nested loop statement with example. Describe go to statement. Explain it with example program. Long question. Write a program that inputs a number and displays the message prime number if it is a prime number, otherwise displays not a prime number. What is for next loop? Write down syntax and working for next loop with example. Write a program to print odd numbers from 1 to 10 using while loops. चैप्टर नंबर 13 है डिस्क्राइब unstructured and structured programming. Define function and differentiate between unstructured and structured programming. Describe benefits of use of function. Explain the 2 types of function. Explain the function prototype in computer. Explain function without arguments with examples. Program with an example. Write 3 advantages of function. How is a function cell made in a computer program? Describe briefly. Difference between function definition and function declaration. Global and local variable, formal parameters and actual parameters of a function. Long question है what type of variables are declared outside any function. How many values can a function return using return statement. चैप्टर नंबर 14 है. चैप्टर नंबर 14 में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स इन कंप्यूटर. एक्सप्लेन फाइल ओपनिंग इन कंप्यूटर, इट्स मोड्स एंड फाइल पॉइंटर विद एन एग्जाम्पल प्रोग्राम. एक्सप्लेन फाइल क्लोजिंग इन कंप्यूटर. एक्सप्लेन स्टरिंग हैंडलिंग इन टेक्स्ट फाइल्स इंक्लूडिंग in computer. What is a file pointer? Briefly explain the concept. Can a file be used for both input and output by the same program? Long question है write the program that counts the total number of characters in a text files. Write a program that counts the numbers of words in a text files and display the count on screen. तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.